हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बायोपार्क्स। एंड आज हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन दिस फॉर्मूला R is equals to rho L upon A, where R stands for resistance, rho stands for resistivity, L stands for length of the wire, and A stands for area of cross section of wire. जिसको भी डाउट है इस न्यूमेरिकल में वो काइंडली पहले के वीडियो लेक्चर्स को रेफर करे, समझ के आए, फिर आके इन क्वेश्चंस को ट्राई करे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन को देखेंगे। सो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 centimeter square is found to be 1.50 centimeter. Calculate rho, that is resistivity of the wire. इस वीडियो को पॉज करो, देन आके सोल्यूशन देखो। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया है। अब आकर के इस सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसको एक साइड पे लिख लो। लेंथ क्या गिवन है वायर की, 80 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इन्होंने दे रखा है क्या, 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस हमको दे रखी है, ओके, रेजिस्टेंस की यहाँ पे यूनिट ओम आएगी। रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 1.50 ओम, राइट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। सिंपल, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। बोर्ड्स में एकदम ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आता है और कितनी बार आ चुका है आई कांट इवन टेल यू। तो आप इसको अच्छे समझिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी पुट करिए, रेजिस्टिविटी हमको निकालनी है, ओके, रेजिस्टिविटी निकालनी। तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1.50 इंटू एरिया क्या गिवन है आपको, ये ओम में है। एरिया आपको गिवन है 0.025 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई ओके, नाउ लेंथ आपको गिवन है वायर की, दैट इज 80 सेंटीमीटर। नाउ यू आर सिंपली गोइंग टू सॉल्व दिस एंड वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको यूनिट सबकी सेम रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटीमीटर है, राइट, यहाँ पे लेंथ भी सेंटीमीटर है, एरिया भी सेंटीमीटर में है, सो कीप योर आंसर इन सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर एक चीज मीटर में होती है तो आप आंसर मीटर ओम मीटर में निकाल रहे होते। अब कुछ नहीं है, उसको सॉल्व कर देंगे हम। नोटिस करेंगे ओम रहेगा, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करने के बाद लगभग आपके पास आंसर आएगा 0.000469 ओम सेंटीमीटर। सो दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। जिनका भी आंसर ये आया है वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको। अगेन क्राइटेरिया सेम रहेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको पॉज करके खुद से आंसर करने के बाद आपको सोल्यूशन देखने हैं। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। टू वायर्स ऑफ कॉपर ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 मीटर, इस बार मीटर है यूनिट, एंड 10 मीटर। एक की यूनिट एक की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर और दूसरी वायर की आपको दे रखी है 10 मीटर। ये ए है, ये बी है। इनकी लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कंपेयर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द टू वायर। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आई वांट यू टू फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड देन मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। I hope you have paused the video. Now you will be looking on to the solution. Now first you have to do what is that? You have to find the area, and before finding the area, first thing you have to do is that convert the unit to same unit. For example, length is in meter. Now convert the centimeter to meter. You can go either ways, but I will recommend to convert centimeter to meter. It doesn't make any difference. Okay, you can go either ways. So first you convert the radius. Let us suppose radius, okay, let's keep it small r, and radius of b for small r b. Okay, now we going to convert the centimeter to meter. 2 centimeter is equals to 2 into 10 to the power minus 2
meter radius. Now same, we're going to convert for the radius of B wire, 1 centimeter for 1 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, now this step we are going, after this step we are going to find the area. Area A, area of B. Area of A is equals to pi r square. Now this is again radius. So remember one thing, when we're talking about wire, the area of cross section means like this is a circle type. We are going to cut the wire and we are going to see the area of cross section after cutting a section. Okay, so that is pi r square. Now when you put the values 1.3.14 into 10 to the power into, like, you have to just solve it nicely. And similarly for here, pi r square 3.14 into 10 to into 1 into 10 to the power minus 2 square. Okay, so here one thing they are saying is to compare the resistances of the two wires. So RA upon RB. Now these two wires are made up of copper. So resistivity of a material is always same. So resistivity of copper will be same for both the wires. It is a constant value. It depends on the nature of material. So resistivity of A, resistivity of B into L of A upon area of A into, now this is going to be reversed, length area of B divided by length of wire B. So we're going to cancel the resistivity because it's same for both the wires. Now we're going to put the values here. Length is, okay, just put the values, okay. I already given the length. 30 upon 10. Area, you already find the area. Now just you have to put the values. Now pi is going to be cancelled. That's why I've not solved here. Okay. So you just have to put these values. 1 into 10 to the power minus 2 square upon 2 into 10 to the power minus 2 square. You just have to solve this. 30 upon 10 into 1 upon 2 ka square, because this is again going to cancel out. You just have to solve this. 3 upon 4. Now it's 3 by 4. The ratio of area is resistance of A to resistance of B comes out to be 3:4. You can also represent in form of like points 0.75. I hope you understood this question quite well. Now we're going to move on to the third question. Now again for the third question, what you have to do is that you have to read the question, then you have to pause the video. So I am going to read the question for you. Calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire of radius 1 mm. Resistivity of copper is already given, that is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Okay. So again we are going to put the same things, right? We are going to again follow the same steps. First, we have to convert all these values into a singular and same value. For example, the resistance is given 1 kilometer. So I'm going to convert this to meter. Okay, so resistance is 1 kilometer, which I am converting to 1000 meter. Now radius is given to be 1 mm, which is, we have to find the area out of this. Area is equals to pi r square. Pi is 3.14 into r square. Now r I'm going to put in meter form. Okay, so it's like 1 into 10 to power. You have to convert it 2 times. Mm to centimeter minus 1. Then into 10 to the power minus 2 for meter. So it's 10 to the power minus 3. Like it's 1.34 10 to the power minus 3. You have to square this value, and this is the meter square is the area. Now you have to put in the formula. R is equals to rho L upon A. Resistivity is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter into length to be 1000 meter upon 3.14 into 10 to the power minus 6. Okay, just have to solve this.
Okay, so after solving, you'll get a value of 5.48 ohm is the answer. I hope you understood this question. Now we'll be moving on to the last question. The criteria again is the same. You have to read the question and then you have to solve by yourself and then we'll see the answer. I hope you have paused the video and solved by yourself. Now you're going to see the solution. A resistance wire made from silver has a resistance of 4.25 ohm. Calculate the resistance of another wire made from the same material such that length is increased by 4 times and area of cross section is decreased by 4 times. It is a very, very simple and classic question which is asked in CBSC many a times. Now, it's a favorite question of most of the examiner. They definitely give this question because you just have to compare these, and this is a very good question to check your concepts. Okay, so first you're going to write the formula like R is equals to rho L upon A. What you have to compare is resistance, right? You have to compare the resistance. We considered this to be R, and second new resistance to be R dash. That is rho L dash upon A dash. Rho is again same because both the wire is same because both the wire are made up of Ag, that is silver. Alright. So now we're going to put everything in the formula. So R upon R dash is equals to L upon A into A dash upon L dash, right? Now length of the original wire is L and area of original wire is A. But the length of new wire is said to be increased by 4 times. So we write here 4 into L. Okay. And for the area dash, that is for the new wire, area is decreased by 3x. So we're going to write by A by, but everything is same. A upon 3, it's 4 here, into L upon A. L से L कट गया, A से A कट गया. 1 upon 12. So R upon R dash is 1 upon 12. So just have to compare, right? Calculate. We also have to calculate. So you can easily calculate. You got R upon R dash to be 1 by 12. Now R upon R dash is to be 1 by 12. Value of R is already given to be 4.25 is equals to 1 upon 12 into R dash. Bring to that side. R dash की value यहाँ से आप find कर सकते हो 4.25 into 12. Now whatever will come here that will be the answer. Okay, yeah, like this. Let's see. So इसको आप solve कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा. Let me tell you the answer. After solving, you'll get 51 ohm. The answer. Okay, so 51 ohm is the answer. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है. आपको आई होप आपको ये पूरी लेक्चर सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, एल अपॉन ए, सारी रिलेशनशिप के फॉर्मूला के ऊपर. और ये चारों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर पूछता है. ठीक है, तो कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट.